Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates. Hello and welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Daria. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Yesterday's session, overall, if you go to see, the dollar index weakened under that 89.97 mark. However, the moment it crossed 90.2, it was picking up strength. How do you see it moving from here on, taking into consideration you have the US non-farm payroll data that will be expected, and what's your anticipation on the same? Okay, now see what happened during last non-farm payrolls data is the same thing. The expectation were very high that the payrolls number will be high. So I have posted in the group. So I think rough consensus is around 650 to 700. That is the consensus on the street for the payrolls number. Now, what actually last, if you recall what happened last, आप एक महीने का अगर चार्ट आप देख लोगे तो non-farm payrolls के एक दिन पहले ही गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आ गया था. और जब डेटा आया तो वो जो डेटा था वो बेरिश था और बेरिश डेटा पे गोल्ड और सिल्वर बढ़ गया. सेम रिपीट हो रहा है. ये जो मार्केट है ये फ्यूचर मार्केट है. इसमें जो फ्यूचर में जो इवेंट होने वाली होती है वो पहले ही डिस्काउंट हो जाती है. तो आजकल जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आएगा वो ऑलरेडी मुझे लग रहा है बहुत अच्छा आएगा और उसको मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है. सो कल ही गोल्ड और सिल्वर तोड़ा गया था. तो आज मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जब डेटा आएगा तो एक नीजक रिएक्शन आएगा. गोल्ड 300 रुपए डाउन, सिल्वर 400-500 रुपए डाउन. वहां पे बाय करना चाहिए. भले डेटा पॉजिटिव होगा क्योंकि होगा क्या, वो डेटा देख के एवरीवन विल सेल, बट इवेंचुअली मार्केट में कल जो बेच के गया वो आज शॉर्ट कवर करेगा. सो आपको वो जो पुल बैक रैली आएगा उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से आप कैपिटलाइज कर सकते हो उसको. सो ऑलवेज बाय एट फियर एंड सेल एट ग्रीड. सो वो फंडा आज आपको डेटा के दौरान अप्लाई करना है. सो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज द कंसेंसस. 1 minute. So as per today morning, the consensus previous payrolls was 266. Okay, और बहुत खराब आया था पेरोल्स और उसके बावजूद भी गोल्ड सिल्वर नीचे आए थे. तो ये जो प्रीवियस मंथ की बात कर रहा हूँ. तो बाद में क्या हुआ, डेटा आने के बाद है ना वो नीचे से ऊपर बढ़ गया. सो आज अगर पेरोल्स 674 एक्सपेक्टेड है और 600 आते हैं या 550 आते हैं तो गोल्ड सिल्वर इमीडिएटली शूट अप हो जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, अगर डेटा आज 700 आता है पेरोल्स के नंबर और गोल्ड सिल्वर में 200-300 रुपए का झटका आता है तो वहां पे गोल्ड सिल्वर बाय करना है. और अगर ये डेटा 800 850 आ गया तो गोल्ड सिल्वर बाय नहीं करना है आज के दिन पे. सो मैं आज पूरा डेटा के ऊपर लीव कर रहा हूँ. आई एम लीविंग एवरीथिंग ऑन डेटा. So all the people who are from south, I got one request. I'm again repeating it. If the non-farm payrolls number which are coming below 600, okay, below 625, 600, gold is a buy. No matter what, you have to buy gold. If non-farm payrolls number come at 700 or 720 or 680 to 720, ये range में आता है. If in that range it comes, then 200-250 rupees, maximum 300 rupees downside you will see immediately after the data, and then gold will shoot up. And if the data is above 800, 780 to 800, then gold and silver, everything will go down, including other commodities will also go down. Because if the job numbers are more than 800, it means US economy is getting very strong. And if US is getting very strong, then market will anticipate that the tapering of the bond purchase program will begin. So my view for today's trading session is in 2 case scenario. If expected say niche, if it comes below expectation, you have to buy no matter what. Okay, if vice versa, if it comes too ahead of expectation like 800, then I think gold and silver will go down. So these are momentary swings in the market. It doesn't dictate the terms, but if it is too strong, then I think it can lead to some. So I have been recommending to go long in gold from 43,000, 44,000. It is already 50,000. So in a 6,000, 7,000 rupees upside, if 2,000 rupees, 2,500 rupees, it goes down, it is a healthy correction. It is not a bear market. हम लोग क्या करते हैं जब गोल्ड नीचे जाता है, अभी कल एक दिन गोल्ड नीचे आ गया
ओके, ये डेटा को एंटिसिपेट करते हुए है। तो सब रशिया का न्यूज बोल रहे थे, कुछ नहीं है, ये मार्केट में पेरोल्स के डेटा डिस्काउंट हो रहे हैं। ये पहले से ही ये डेटा अच्छे आने वाले हैं, वो मार्केट डिस्काउंट करके नीचे ऑलरेडी आ गया है, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर दिया है कि एंटिसिपेट करते हुए डेटा अच्छा आएगा। सो नॉट टू वरी, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज द एंड ऑफ बुल मार्केट, बट I will wait for the data, and at 6 o'clock I will inform in the group what needs to be done after looking at the data. Right. So the view mostly is 300 rupees downside I will buy. Okay. Kunal, with regards to crude as well, today's session it was trading marginally lower. Clearly, there was a sell-off in commodities, and that's what crude also followed over the last couple of sessions. From here on, do you expect that firmness to continue? Because clearly, there is resistance at $70 per barrel on crude. Okay, see, crude, there is no brainer. Crude fundamentals are simple. If US and Iran meeting, okay, if that meeting, it all depends on the US-Iran meeting. The sanctions are lifted, crude is definitely going to go down. So I don't think so tonight that outcome is going to come. So for evening session, you can definitely go long. For traders, they can go long for the upside target of 51.20, 51.30. I think oil can go up in evening session. But somebody who wants to take a positional view to go short, especially, they have to wait till what comes in Iran, because metals corrected, gold, silver corrected, oil is the only commodity. So everyone is jumping to short oil. So I got 5 messages from morning, sir, should we short crude oil? My answer to them was no, wait for the Iran meeting. You can't do that, because what happens in this market is what seems obvious. हम लोग क्या सोचेंगे कि metals is down, gold is down, so next is crude. Yeah, you can be right, but not immediately, because oil is showing amazing strength. Yesterday, all the metals were down by 3 and 4%, 3%, but oil was not going down by even 2%. So except the fact that even though you have to short, not the right time. For intraday, I would recommend to go long. Okay. And with regards to base metals, today's session, we've seen an up move and it's halted the decline that we've seen from previous sessions. What do you make of it? Will it be the same strategy as gold and silver, taking the US data into consideration? See, I told you, I told everyone that the directional view on metals is down only, no matter what happens. And I explain you the reason. China themselves doesn't want higher commodity prices. China is cracking on the speculators. So China को खुद को, China जो 55% of the metals consume करता है, उनको खुद को अभी ये प्राइस बहुत हाई लग रहा है, उनकी इंडस्ट्री को हर्ट कर रहा है. अगर आपको मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर स्टील, आप कार मैन्युफैक्चरर हो, तो आपका मेजर कंपोनेंट क्या है? कॉपर, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कंपोनेंट यूज होता है. तो सबके प्राइस 50% अप है. तो आप जो कार पहले समझो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए में बेच रहे हो, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 30-40% बढ़ गया है. तो आप अगर वही कार आप 14 लाख में बेचोगे, तो कौन लेगा वो कार को? Nobody is going to buy that car at 14 lakh because economic conditions are worse. So now even China is after the speculators. China अपने स्पेक्यूलेटर के ऊपर क्रैक कर रहा है. सो ये एक रीजन है. मेटल्स में कल भी एक बहुत ही मंदी का राउंड आ गया और मुझे आगे जाके भी बाउंस पे. सो कॉपर ऊपर आता है, तो वेट फॉर द, मैं कोई चार्टिस्ट नहीं हूँ, सो आपको मैं लेवल नहीं दे रहा हूँ, पर मेरा रफ अंडरस्टैंडिंग 45 तक बाउंस हो सकता है. कल एक दिन में 25-30 रुपया गिरा है, 5-10 रुपया ऊपर आ सकता है. तो 45-48 के बीच में मैं कॉपर को बेचने के लिए रिकमेंड करूंगा. मुझे लग रहा है कि अपसाइड सस्टेन नहीं होगा इसमें. सो मेटल्स में अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है, और मेटल्स में हर उछाले पे बेच के ही काम करना प्रेफर करूंगा. आई एम रिकमेंडिंग टू sell metals on all rallies. So 8-10 rupees upside in copper, 3-4 rupees upside in zinc. You should sell. It doesn't look good fundamentally now. Okay. Apart from that, Anup has a question. Clients have already a buy position in gold and silver since yesterday. So can they hold for short term? Yes, Anup, you can hold after data. The moment data comes, I expect you to call me around 6, after 6 o'clock, 2 minutes के अंदर you can call me. I will tell you whether you should hold or whether you should square off. So if you bought at 69,500 or 400, then you must be out by 1,000 rupees. So what needs to be done, I will tell you after the data. I can't tell you right now. Right, so that's going to be completely data driven as well. Can we add silver for 2 months?
Yes, you can add. Fundamentals are not bearish. Absolutely. If you have a 2 months view and if you can see the downside, further downside, then you can add. It all depends how you are managing your mark to mark. So the way you are managing your mark to mark losses. So for example, if tonight the data is 800, then the silver will again go down by 2,000 rupees. So if you can see that 2,000 rupees pain, then you can buy. Otherwise, wait for the data. Okay, so these are the questions that have come in, and I think they've been answered as well. Thank you, Kunal, so much for your views. Thank you, participants, as well, and a happy weekend.